Hello and welcome to KYC. I am Sharad Dubey and you are watching NDTV Profit, and this is one of the most loved KYC shows as I get you interesting companies which can be newly listed or maybe something which the street is talking about. But I'm not going to give you very easily. I'm going to give you some hints. Try to guess it. What's the company which we'll be talking about in KYC? The first one is it's a manufacturer of renewable energy products. First hint I've given you. Let's talk about the second hint. Surya Kumar Yadav is the first brand ambassador. Of course, the company is having a couple of more brand ambassadors, and that includes Anil Kapoor as well. That's Jackass. But let's talk about one more hint, and that is it's listed recently on November 20, 2025. But has that company given money to the investors in the IPO? Well, I don't think so. It's down 22% from the IPO price. And of course, we had given you in the socials also some images which you could have decided what this company is all about. There are a couple of brands to it, but the company in focus is Fujiyama Power Systems, and of course they have another brand called UTL Solar also. So दोनों brand में आप confuse मत होइएगा. But why are we getting this company? This was recently listed. Why is the company coming? Is it different from the solar theme pack? Because solar theme pack seems to be out of favor of the market. The global freight price, that is rising. Now, will this procurement price from China rise because of that? That is the first question I would like to ask. The second one is the subsidy-based business. Has the order slowed down? Remember that B2G risk is always there for a company in the solar industry, or is the company hedging for its B2C business? These are the questions we will be asking Fujiyama Power. Interesting number is the 18.7% Q3 margins coming in. Is this sustainable? If yes, ये क्या backward integration का जादू है? That's the question we'll be asking. And the capacity expansion plans, capex and the distribution, are they playing in the tier 2, tier 3 cities? All our viewers in Indore, you could say in Punjab, in Jaisalmer, whoever are there in tier 2, tier 3 cities, are you seeing the products near your houses or your neighbors? That's something to ask about. And the progress on the ramp up of the Dadri line. These are the extension I'm talking about, the new manufacturing facilities which start coming up. So these are the key questions we will be asking Fujiyama Power. Of course, there's a lot of interest on it. A lot of you have written to me about it. But let's take it slowly. Of course, any fundraise plans if it comes in, because promoters have a good stake, maybe they can dilute going ahead. But to give in all the details, we'll have Pawan Garg, the founder and joint MD of Fujiyama Power. He'll be on the show. He'll be clearing most of our doubts on all the questions we have raised. But let's talk about the company, how important the company is all about. Is it different or is it just the same? Let's go into this layer by layer. It's an Indian solar solutions company. It was established in the year 1996. So it's not a new company. 30 years already in the industry, has 4 existing facilities and 1 extra facility I spoke about. That was the Dadri facility which we are talking about. And yes, new facility is coming from Ratlam. It's in Madhya Pradesh as well. Also, apart from this, let's look at the total coverage, and that is what something which has taken my eyes, especially the 6,300 dealers, and they are focusing on tier 2 and tier 3 cities. That is where the magic might lie for this company. They're not targeting tier 1 so much or the exports. So this is where the story of Bharat might play out. 90% revenue comes from the B2C segment. That is pretty much decent because a little bit of pricing power can definitely come in here, but overall the industry overcapacity is there. The key focus, of course, I've spoken about it. This is where the focus lies on. And one more thing they have written is off-grid. Off-grid means non-subsidy. Non-subsidy means payment का जो issue है, that can be sorted because ये government से नहीं आ रहा है. But what are the key products to look at? There is solar power generation. This is one of the key first projects which have come in. Then there is solar cells, there is power supply and lithium-ion batteries also. So the entire ecosystem comes in. Of course, these are the new ones I'm talking about. Around 1.5 gigawatt manufacturing capacity is there in power electronics and batteries. But look at kya extension hai, that's around 2 gigawatt. That means let's add it up to make it simplified for you. Totally, it's 3.5 gigawatt. That's what the company is targeting. Capacity levels की तो बात हो गई. But क्या target है? This is very much important, and they are establishing the south and east. ये north की player जो है, if you see in your houses, near your houses, this is where the brand comes in. But south and east, these are the new areas. And remember, east has a lot of tier 2, tier 3, tier 4 cities and towns.
But why is the market not giving so much premium to the solar theme? The first is higher priced IPOs, mispricing at times, and that's what the retail complains. The second one is the excess dependence on China for procurement. That has been a big question mark for all the solar players, and now they are focusing on their backward integration. The international raw material pricing, that has turned very volatile, and especially the uncertain tariffs which comes in, especially from US, that's where a concern comes. But all in all, if you are in solar industry, there is a B2G, business to government risk, and particularly on the payments and the order flow. Kab payment aayega, kab order aayega, there is always a lumpiness in it. And that's the business nature of it. The global overcapacity at times and the reduced pricing power, that is where the solar theme becomes a question mark for investors. But to remove that question mark, I'm going to get into my KYC show and I'm going to give you 8 parameters where we'll judge the company and we'll try to figure out isme naya kya hai. First one is income statement, balance sheet, cash flow. These are the 3 holy grail of numbers which we have to talk about. Return ratios, how much the ROC numbers, ROE numbers have come in. Looking at shareholding, remember, this is a newly listed company, तो कोई बड़ा trend आपको नहीं मिलने वाला. You'll just get something which is there in the December quarter. Street cred, only IPO tak ke details are abhi tak. And valuations, we'll compare with a lot of companies which we have discussed all across on social media and on TV as well. And outlook, industry kya kehta hai, company kya kehta hai. These are the 8 rating parameters where we'll talk about it. But let's talk about the first one, income statement. It's one of the most important statement to look at. Revenue, EBITDA, profit, these 3 are there. You can look at it. Over here, the 3-year CAGR, all of them going past the 40% mark. This is something you should be looking at as a long-term fundamental investor. And overall, it looks very strong numbers. But abhi numbers kya hai? Third quarter, let's pull out the numbers and see what has happened here. And has the company performed or not? The Q3 numbers have been on the stronger side, and I had mentioned you about that 18.7% margin. So keep that in mind. And this overall income statement, I will give a strong thumbs up. Let's talk about the balance sheet. And balance sheet is where my concern starts coming in, because it's an asset heavy business. Company backward integration kar rahi hai, so debt बढ़ रहा है, and this is coming after the IPO. That's where the question comes. It's around 346 crore. That's coming for FY25. Has that reduced a bit? We'll ask that management. It's roughly 470 crores since the last time I heard in the con call. But nevertheless, debt reduction plan, is there any? Or will the company take more debt? So that is why, to balance things out, I have to give a neutral rating for the balance sheet. Remember, the debt figure is around 470 odd crore. We'll ask the management about this entire detail. But cash flows is very much important. And of course, operating cash flows, that has actually come down in FY25. That means there is lumpiness in the business. And I told you, at times, even from B2C customers, at times there is a late delay in payment also comes in. That's something we'll ask the management also. How does this model work, B2C versus B2G? But let's look at that. Operational cash flow to PAT, that has also come down, and that's where the concern comes in. So right now, just to judge the FY25 numbers, I have given this a negative rating for cash flows. But let's talk about return ratios. ROC. ROC means return on capital employed. How things have moved around, and ROC numbers, looking at it, it has gone up from 18% to 21%. Matter of 2 years. In FY25, it's at 39%. Will they sustain these return ratios going ahead? Why? Because the company is taking more debt, maybe for the expansion. And if it takes more expansion, some return ratios might be under pressure. This is just mathematics. But net on the past data, it is very strong, and I've given it a strong thumbs up when it comes to the return ratios. Let's talk about the shareholding. And remember, we have to be very fair to the company. There is no major trend. This is just one all. 2% FIs are there, and DIs are almost 5%. So over here, there is a scope of, you could say, some kind of increase in FIs and DIs. But currently, entire sector is out of favor right now. So there might be some bargain hunting, but there is some kind of a big correction happening. But promoters are having healthy 87% stake. Remember, by SEBI regulations, this is supposed to come down to 75% in the next 3 years. So promoter sales, fundraise, you can expect that for an asset-heavy company like Fujiwara Power. So net, it's a neutral rating. Let's give it more time. But let's talk about the street cred. IPO was in November 2025. That means
almost 2.5 months it has been. But from the IPO price, market condition bhi dekh lo, it's down 22%. Okay, others have also corrected, and I'll get you that picture as well. Last 1 month also stock is down 16%. So for a short period of time, of course, for the IPO people and the people who have entered post the IPO, you haven't made money yet. That is why I've given a thumbs down when it comes to Street Cred, but you need to wait it out and see what happens in the future. And when the next time this company comes on KYC, we will judge them on much more longer time horizon. Let's talk about the valuations. Valuations is more important here. I'll tell you why. Most of these solar themed stocks are down by almost 60 to 80% in their valuation from the peak levels. That's where the interest had come in the markets. But now what has happened? There are bigger names, Waaree, Premier, they are still at the 30s, but they were trading almost at 90, hundreds. Insolation is 16x, and over here the company is still maintaining a little bit of premium against its peers. If you could just show the other companies also, apart from Insolation, and that is what I'm talking about. But Fujiwara Power is still at 28 times. Feel it's decently priced because company has that tier 2, tier 3 exposure they are talking about, mostly domestic it is, and the distribution is their strength. That's what they have been constantly talking about. So it's a neutral rating when it comes to the valuations when the peers come in. Let's talk about the outlook, how things are moving in outlook, and of course there are a lot of concerns here. See, the long-term story is definitely there. Government is all giving good policies, but these things take time, and you need to be a long-term investor, say 5 to 8 years of horizon if you are actually interested in this industry. Now, the industry itself, 40 to 45 CAGR is projected for the rooftop solar market, how things are growing, and the Bharat, that is where the strength we are looking at. The supply chain risk from China, that is where the concern comes. Almost 90% import of the total imports, whatever that comes in, it comes from China. And this is not for this company, but this is for the entire ecosystem. That's why everybody is focusing on the backward integration, and the key products are taking place. And we'll talk with the management about how these key details are happening. Also, apart from this outlook, apart from the backward integration, the rising raw material prices and the company's pass-through mechanism. कितने महीने में जब दाम बढ़ा तो कब वो प्राइस जो हाइक है या कम हुआ है, कब pass through करते? That's a very important question because we see all these numbers quarterly basis, and the most important thing is the B2G business risk in any kind of a field. Remember, 91% revenue comes for the B2C segment. So outlook, it's a neutral. Let's look, go ahead and see how things happen. But let's talk about the ratings, how actually things are panning out. And largely we see the income statement is very strong, Q3 numbers, the margins are really good. Balance sheet, it's neutral, but the debt remains a concern, but that's the business model about it. Cash flows, the company needs to prove itself, return ratios have been good. Street Cred and shareholding, the time period you could say is very less. Let's give it more time to understand the company. Valuations are decent right now because the entire sector has corrected, and outlook also. Long-term specific, everything is good, but of course, short-term basis, there are question marks. So, a neutral rating for my analysis in a general show, we gave almost 4 to 4.5 for the most of the companies, and this is, you could say, in the middle. Even Stevens, 4 out of 8 for Fujiwara Power. Of course, there is something, couple of new things against its peers, which I really like, and we'll discuss about that. But joining us would be Pawan Garg. He's the joint MD at UTL Solar. This is their brand, Fujiwara Power. In 1996, he had founded this company. Now he has more than 30 years of experience in this space. It's not new for him. So of course, anything new which comes in, he'll share with us. And joining us is Pawan Garg. Good afternoon, Pawanji. It's always a pleasure talking with you. I'm seeing both the brands of UTL and Solar on your shirt. So I'm like, ये दोनों brand एक ही है, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, Sarji. Thank you for the opportunity. जी बिल्कुल. Pawanji, the first question is definitely going to be on the Q3 numbers, and that margins was something which came in my eyes. That was almost 19% up. Now, for a business model like yours, of course, there's a blended basis. Do we expect that to touch the 20% mark because of this backward integration? And if yes, timeline बताइए. You will see in coming quarter. Definitely, your wish will be completed. All right, but just one more query on it. Like, what are these margin growth levers? Like, what things are happening? In fourth quarter, okay, we can expect a 20% margin, but what are the growth levers that margins बढ़ेगा इसके कारण?
Uh, okay, sir. Major thing is backward integration and operational efficiency. And one more thing is we have end-to-end solution basically. End-to-end solutions means from R&D to development to production to marketing and to distribution and services, after sales services. So we have end-to-end solution, and because of that, and we have complete solution included power electronics components, that is inverters, solar inverters, storage, that is power batteries and solar batteries and solar panels. We have complete solution, sir. And Pawanji, another question is the amount of global geopolitical tensions are happening. Of course, there is some procurement which comes from China as well, and there's a raw material pricing impact also. Just two important queries, and then we'll get back to the business model. Is that have the procurement prices been impacted because of the higher freight rates? And secondly, are the raw material costing price also going up? And if yes, what is the pass-through mechanism? Uh, so, Saraj ji, rate is very low percentage basically of raw material, and you will see 75% is our domestic procurement, only 25% is import. So if you see ke total import is very less against freight is very less percentage of total raw material part. And second thing, if price fluctuations are there, all the market, what happens, they pass on to customer basically. This is market trend Right. basically. And Pawanji, apart from the margins, apart from how the situation has happened, अगर पूरा बिजनेस के बारे में बताना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन को Hmm. लेके दैट इज वेयर आई जी. फील देयर इज अ बिट डिफरेंट देन योर कंपटीटर्स. आपने टीयर 2 टीयर 3 के बारे में बहुत बात किया है. पवन जी, इस Right. एक्सपेंशन प्लान के बारे में बताइए कि किस तरह आप जाने वाले हैं और क्या कंपटीशन रिस्क भी आ रहा है आपको आपके पीएर्स के साथ देखते हुए, बिकॉज एट टाइम्स ये कमोडिटी वाली बिजनेस भी बन जाती है बिकॉज इज लॉट ऑफ बिल्कुल कंपटीशन हैपनिंग. व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? क्या बिल्कुल. एक्सपेंशन प्लान रहेगा? देखिए सर, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है मार्केट में। मेन चीज़ ये है, बोलिए. 96 से जब हमने शुरू किया, अगर हम देखेंगे तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी को हमने पहले से जज किया और उस पे हमने काम किया और सॉल्यूशन मार्केट के लिए लेके आए। मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड वी वर्क ऑन दोज़ अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हमारे पास जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास मोर देन 500 एसकेयू है जो कि मार्केट में सबसे बड़ी रेंज मानी जाती है अपने आप में। और बेस्ड ऑन कस्टमर्स एप्लीकेशंस एंड बजट वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो वहां पर जो हमारे पास एक मोट है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का, तो वो हमारे को मार्केट से अलग बनाता है। और पवन जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो एक दादरी की प्लांट है और एक रतलाम की प्लांट है, इनके यस सर। इम्पोर्टेंट जो है अपडेट बताएं, इनके जो है जो प्रोग्रेस हुआ है ये बताएं, और कब जी। जो है आंकड़ों में आप कहेंगे कि इसमें थोड़ा इंक्रीमेंटल बेनिफिट आ सकता है, ये बताएं. ये यस आपके दो प्रोडक्ट, एक दादरी लाइन है और दूसरा है रतलाम जो मध्य प्रदेश में, बताएं. यस सर। तो सर अगर आप देखेंगे हमने 96 से शुरू किया तो हमारा जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है वो 50% की हमारी ग्रोथ रेट रही है। अगर आप लास्ट 5 इयर्स का भी अगर आप देखेंगे सीएजीआर, तो 50% का हमारा सीएजीआर रहा है। और उसी में अगर हम देखें, अगर फ्यूचर में हमें वो ग्रोथ रेट मेंटेन करनी है, तो हमें एक्सपेंशंस तो आगे के लिए देख के चलना होगा। ये तो बिल्कुल. हाँ। और पवन जी, अ, एक एक्सपेंशन के बारे में तो बात हुआ, लेकिन कुछ कैपेसिटी हाँ जी। एक्सपेंशन, कैपेक्स, हाँ, अगर अगले साल का कैपेक्स का कुछ अमाउंट आप रखे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान्स किस तरह आप अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, जरा उसके ऊपर भी यस सर। थोड़ा सा झलक दें. तो सर पहले वाला क्वेश्चन मैं एक बार सॉरी कंप्लीट कर आराम लेता से हूँ। जो बोलिए दादरी बोलिए. वाला है, हाँ जी, जो दादरी वाला प्लांट है हमारा वो कमीशन हो चुका है ऑलरेडी जनवरी में। और इस क्वार्टर में हमें उसका नंबर्स के रूप में बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे पास अभी तक जो बिजनेस है, रूफटॉप सोलर का बिजनेस हमने 2008 से जो डेवलप किया, और अभी पिछले 1 डेढ़ साल से जो हमारे पास अपॉर्च्युनिटी आई खास तौर से पीएम सूर्य घर योजना के तहत, तो उस अपॉर्च्युनिटी का हमें बेनिफिट उतना नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए रीज़न ये था कि एक कंपोनेंट होता है डीसीआर
सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट थी और डीसीआर सोलर पैनल के रिक्वायरमेंट के लिए एक रिक्वायरमेंट है सोलर सेल की, जो कि इंडिया में बना हुआ होना चाहिए, डीसीआर सोलर सेल होना चाहिए, जिसकी के डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई काफ़ी कम है। तो वो जो अपॉर्च्युनिटी थी वो हमारे से मिस हो रही थी। जितना भी हमारा अभी तक ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, अगर Q3 के नंबर देखेंगे, तो उसमें से सब्सिडी वाले बिज़नेस का रोल काफ़ी कम मिलेगा। मेजर जो हमारा बिज़नेस ग्रोथ आई है, वो नॉन सब्सिडी बिज़नेस से आई है। जी, बिल्कुल। अब और पवन जी, एक बार दर्शकों को एक बार समझा दीजिए कि जो सब्सिडी बिज़नेस और नॉन सब्सिडी बिज़नेस होता है, इसमें क्या यस सर, जोखिम होते हैं और क्या फ़ायदा होता है? और ऑफ ग्रिड और जो आप कहेंगे कि ऑन ग्रिड होता है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे दर्शकों को बताएँ। यस सर, बिल्कुल। तो सर मेजर रूप से तो हम 2 पार्ट में हम अपने सिस्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड में हम क्या करते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा पावर जो हमारी सोलर पैनल से बनती है, उस पावर को जब हम घर में यूज़ नहीं कर रहे होते, तो हम ग्रिड में एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो उस सिस्टम को हम कहेंगे ऑन ग्रिड। उसके लिए नेट मीटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक ये है कि हम उसमें बैटरी नहीं लगा पाते। क्योंकि बैटरी बैकअप की उसमें वो बैटरी बैकअप नहीं दे पाते। लेकिन जहाँ पर हमें बैटरी बैकअप देना होता है, जहाँ पर गाँव है, हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज़ है, जहाँ पर पावर कट्स है, वहाँ पर हमें सिस्टम ऐसा लगाना पड़ता है, जिसमें कि हम अ, अपना पावर बैकअप दे सकें। लाइट जाने के बाद पावर को जनरेट कर सकें, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर में पावर जब हमारी चली जाती है, तो उस टाइम पे हम सोलर की पावर भी जनरेट नहीं कर पाते। रीज़न उसका ये होता है कि हमें अपने इन्वर्टर में एक एंटी आइसलैंडिंग फैसिलिटी देनी होती है ऑन ग्रिड में। जब हम पावर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक सर्टिफ़िकेशन लेना होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से, जिसको हम एंटी आइसलैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। उसका आपने रीज़न पूरी ये है कि तरह अगर हाँ। आप पवन जी, आपने ऑलमोस्ट पूरा चीज़ कह दिया। थोड़ा जी, समय भी कम रहते तो इसलिए हम थोड़े हाँ, जल्दी सवाल पूछते ठीक हैं। है, तो हुँ, हाँ जी, ऑफ ग्रिड में हम बैटरी बैकअप दे सकते हैं बिल्कुल। और हाइब्रिड सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का और पवन कॉम्बिनेशन जी, होता है। लिथियम आयन बैटरीज़ पे भी जो है ऑफ कोर्स आपका पूरा मेन बिज़नेस तो नहीं है, पर उसमें भी आप आ गए हैं। किस तरह देख रहे हैं हुँ। डेवलपमेंट हो रहा है? आर&डी की तरफ हैं कि अभी भी मतलब कवरेज स्टार्ट हो गया है? बताएँ। देखिए सर लिथियम आयन बैटरी हमने शुरू कर दी थी कोविड के बाद हुँ। 21 में हमने शुरू कर दी थी। छोटा हमने एक्सपेरिमेंट किया था अराउंड 100 मेगावाट का हमने प्रोडक्शन शुरू किया था। उसके बाद लास्ट ईयर हमने 500 मेगावाट का और उसमें हमने एडिशन किया, जो कि हमारी वो पूरी कमीशनिंग हो चुकी थी और अभी हम पूरी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। और इस जो करंट ईयर है, उसमें हमारा जो लिथियम आयन बैटरी का जो कंट्रीब्यूशन है, वो 25% है अलोंग विद लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी तो हम बना ही रहे हैं और लिथियम आयन बैटरी भी हम बना रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेंशन जितना भी हम कर रहे हैं, वो लिथियम आयन बैटरी में ही कर रहे हैं। रीज़न उसका ये है कि आने वाले टाइम में लिथियम आयन का जो मार्केट शेयर है, वो बढ़ने वाला है। पवन जी, डेट के बारे में भी आपसे थोड़ा बातचीत करना था। आप Q3 का जो कॉन कॉल था, वहाँ से मुझे ये 470 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया था। मैं सही हूँ? अ, आप सही होंगे सर, आपने बिल्कुल सही जी। हाँ, तो और पवन जी ज़रा लेकिन बताएँ कि दैट ये क्या डेट और थोड़ा बढ़ने वाला है या थोड़ा रिड्यूस करेंगे, क्या होगा अभी? डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो हम आप कम होता हुआ मिलेगा आप। अच्छा, आगे जाते हुए कम होता हुआ रहेगा। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम ठीक है। होता हुआ तो मिलेगा हमने सर। डेट की यस बात सर। कर ली, लेकिन जो सब्सिडी की बिज़नेस है, यहाँ पे मतलब इंडस्ट्री आपके कंपनी के बारे में नहीं, पूरे इंडस्ट्री में जो है, कभी पेमेंट इश्यू हो जाता है, कभी ऑर्डर में स्लो डाउन आता है। तो आप जो है किस तरह देख रहे हैं? अभी करंट चैनल चेक्स क्या बता रहा है आपको? पूरे इंडस्ट्री के हुँ। लिए बताएँ। तो इसमें इसमें 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ सर। हुँ। एक तो ये है कि अभी तक की हमारी जो ग्रोथ हुई है, वो बिना सब्सिडी वाले बिज़नेस से हुई है। सब्सिडी वाले बिज़नेस से जो एडिशनल ग्रोथ होनी है, वो हम अब उसको उस अपॉर्च्युनिटी को ले पाएँगे। सेकंड चीज़ ये है कि जो मार्केट में डिमांड अचानक बढ़ी है, मैं ये मानता हूँ वो सब्सिडी की वजह से ना बढ़ के, सब्सिडी की वजह से जो अवेयरनेस आई है, उसकी वजह से वो डिमांड बढ़ी है। क्योंकि सब्सिडी की वजह से अवेयरनेस आ गई है। अवेयरनेस आने से जो अब मोमेंटम आ गया है, मुझे लगता है कि वो मोमेंटम अब रुकने वाला नहीं है। एक चीज़ रीज़न और उसका ये है पूछना कि था, ये हाँ।
यस पवन सर। जी, एक और चीज़ पूछना था। देखिए, आपका प्रमोटर स्टेक तो 87% है, आपको 2.5 से 3 साल में घटाना पड़ेगा 75% तक। जिस बिल्कुल तरह सर। आपका कैपेक्स हेवी धंधा है, आप एक्सपेक्ट जी। कर रहे हैं कि 6 महीने, 12 महीने में एक फंड रेज़ या कुछ डाइल्यूशन होगा? 12 महीने में तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे सर। अच्छा, 12 महीने के बाद जैसी रिक्वायरमेंट कंपनी को होगी, हाँ। उसके अकॉर्डिंग हम मतलब के अगले 12 महीने में हमें ये दिखाई नहीं देता अभी। पर जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे सर। पवन जी, आपने जो है पूरा बिज़नेस, पूरे इंडस्ट्री के बारे में आप हमें बताया और केवाईसी में आप आए। आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक जी। पवन जी फॉर द अ, फ्यूचर एंड एक हाँ, शरद बोलिए, जी थोड़ा-सा अगर आप टाइम दें तो बोलिए। मैं इसमें थोड़ा-सा ये ऐड करना चाहूँगा। जो बी टू सी बिज़नेस है, जो हुँ, एंड कस्टमर का बिज़नेस है, जो गाँव का देहात का बिज़नेस है, हाँ। ये बिज़नेस ये बातें हो रही है इंडस्ट्री में कि ओवर कैपेसिटी हो गई है या ये है। लेकिन अपॉर्च्युनिटी इसमें इतनी है कि आज जो चाइना है रूफटॉप सोलर में 60 गीगावाट एवरी ईयर ऐड कर रहा है। और सर पवन सर, थोड़ा समय कम है, हमें रुकना पड़ेगा, यस सर, लेकिन आपसे बातचीत ठीक है, ज़रूर करेंगे। दूसरे केवाईसी में भी आपको ज़रूर लाएँगे। 5-6 महीने ठीक है बाद सर। कितना यूटीएल सोलर और फ्यूजोमा पावर सिस्टम आगे बढ़ा है। धन्यवाद सर, आपसे बात किए बिल्कुल सर, थैंक और यू जी। अच्छे बात किया। थैंक यू जी। एंड दिस इज़ द मैनेजमेंट राइट फ्रॉम द हार्ट, राइट फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड, speaking about UTL Solar, Fujiama Power Systems growth plans, and of course, answering all our queries which you had put a little bit in Hindi, a little bit in English. But that's all, folks, and that's the beauty of KYC. Stay tuned to NDTV Profit.